Yes, welcome Dheeraj ji. How are you? Thank you, Guruji. Thank you, thank you, thank you. Yeah, so I'll just give a little informal introduction about you and to everyone. सबके लिए, this today's synergy will be English Hindi जैसा flow होगा, बीच में हिंदी भी आएगा, English भी आएगा, whatever you flow like, let it flow. And मैं सबको बता रहा हूँ कि I know Dheeraj through Kapila actually, and I met Dheeraj ji, I think, first time 3 years back when both of them, Dheeraj is Kapila's husband and Kapila is Dheeraj's wife. Who is the better half? You can choose at the end of the program. Okay. So, uh, I met them because both of them came to fetch me from the airport and we went and had a wonderful time at their house. I remember that occasion. And I just found you very, very soft, relaxed, peaceful person. That was my first impression about you. And that impression yet is there with me about you. So when I met you in the Scope camp a few months back, and again, you are like in a typical world, chilled out person. ऐसा मुझे लगा. I don't know. You can clarify whether it is so. Okay. But very relaxed, very calm, peaceful. And whatever I hear from Kapila about you is always wonderful words. So I spoke to Dheeraj ji a few days back about this synergy. And that's the time I actually got to know him more deeper. I got to you more deeper. And I'm sure everyone today is going to get a lot and lot of benefit of today's. If they stay for the first couple of hours, they stay till the end of the program, they'll get a lot of benefit. Hearing your story and I was told by you that, you started with some 5,000 rupees of your money and balance you borrowed from everyone. Today, your company is 15 crore and growing faster and faster. And it will go if you are in this energy. Growth is by default. What's this energy? Of course, we will have a conversation about that. But basically, whatever I've learned from you, Dheeraj ji, in the conversation we had was you had a lot of ups and downs and struggles and very tough times from, being a job orientation, then you started a business enterprise. I think many of us want to start. You are working in the, like I would ask, how many of you are working as a job and would like to start a business someday in your life? So for those people who want to start a business, they will be highly inspired by Dheeraj's journey of life. For those who are in business and want to expand, they will be highly inspired. And for everyone, there will be something to take away from today's. So with that, I just ask Vijay to introduce Dheeraj formally, and we'll start today's synergy with you. Wonderful being here. Yeah. Mr. Dheeraj Taneja, a visionary with a clear focus to make the difference. He is a managing director of Pet Plast India. He founded the company in year 2009. He did his engineering from YMCA and MBA later on. Before founding Pet Plastic India, he was working with most reputed companies like Ricoh, Xerox, and IBM. Today, Pet Plus India is very well reputed company in packaging industry and manufactures PET bottle machine. But the journey was not easy, but made possible by vision and diligent efforts of Mr. Dheeraj Taneja. The company started with the team of 5 members in 1,500 square feet rental area and had turnover of just 30 lakh Indian rupees for the first year. Today, company has team of around 100 plus employees, have turnover of over 15 crore plus, and build up area of 50,000 square feet owned by the company. Exporting machine to over 20 countries. From year 2015, company is growing with annual growth rate of 200%. Even in the tough time of COVID, the company has not only managed
to survive, but also maintain the curve of growth and introduce new manufacturing plant and have a launch new machine model. All this has been possible because exemplary leadership of Mr. Dheeraj Taneja. He values visions and winning attitude kept the ball rolling for him personally as well as professionally too. He has a wife, a son in his family. His mantra of life is turn every challenge into an opportunity. So thank you and welcome. Dheeraj ji, thank you so much. Yes. Thank you, Yes, Vijay Manoj ji. ji. Thank you, Manoj ji. Yeah, I'll be sharing with everyone. Dheeraj ji will be sharing his journey of life in the next 10-15 minutes. He'll be sharing, and then straight away I will ask some questions, and we all can ask some questions. I have a few questions to him, which I know will benefit everyone. So, yes, Dheeraj ji, you can start your journey of your life. Okay. It was very Thank you, Manoj. Thank you, Manoj ji. And, you're always our guru. And, with your blessings, I'm so thankful to you to come up in this platform. And I hope everybody will like it. So I'll start my journey with my schooling time. I born brought up in Rishikesh, and there my job was, my father was doing a government job there. And my schooling is all done there only in Rishikesh, that's IDPL colony. Then immediately after schooling, I joined engineering. That's in my Institute of Engineering, Faridabad, Haryana. During my schooling time itself, my dad was little tough to me that, लाइफ में कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही लोकल बने रह जाओगे. मेरी तरफ से कोई आपको सपोर्ट नहीं होगा. अगर आप अपने लेवल पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तो दैट विल बी गुड. Otherwise, my support will not be there. Like, on those times, donation colleges and these things were very much on. But, I was very well prepared. मुझे अपने level पे ही I have to do my best. And my dad had supported me a lot. He himself is of engineering background. So on that ground, I got admission there in government college, and I did my engineering. So at the time of engineering also, my dad told me that after engineering, you have to take care of your job and you have to make sure that, you make your career in the right direction. और कुछ उनके प्रेशर से और कुछ अपने कर्मा से, I got immediately a job. So that was in 1995 when I got my first job immediately on clearing my college. At the time of clearing my college, I was having 3 jobs in my hand. So I have to choose which one I have to join. So that was a golden time I had. But when I was doing job, it was a very basic kind of jobs. और मुझे लग रहा था कि लाइफ में बस ये इसी स्टेज पे ही रह जाएंगे, क्योंकि जॉब में हमेशा ये रहता है कि you give your best, still you have to wait for your appraisal, and still you are on the same post, and it take time for you to grow up. So वो चीज मेरे को हमेशा रहता था to give my best on doing job. So I was doing job in a very good way, and I keep moving in my jobs. I did jobs in 5 companies, and every time I left the company, only thing I keep myself as a commitment that I give my best to the company. Till the last day I was with that company. And by keep doing good job, I keep getting promotions, keep getting better jobs. So for 14 years, I did my career in service line. And last 7-8 years of my service line, I was handling a big projects, like from 0 to 10 crore to 200 crore. So these kind of, job profile I was handling. And my last job was with IBM. I was there as a program management, and I was handling a very big project for an insurance domain company. And I was handling on my own, and I was having a team of 125 developers team. In 2008, when American recession has come, and that has hit our project also, that whole project has to be called off. But usse kafi pehle, my dad also, left the job in VRS scheme, because that government company has shut down, that pharmaceutical company. And
उनका 97 में ही उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया था, और आई कीप सपोर्टिंग हिम इन अ बैक एंड कि उनके बिजनेस में भी मैं उनको कहीं ना कहीं whatever best way I can help him out. But while doing job in my last career time, it was very clear in my mind that, you know, one day I have to go into entrepreneurship. So that was clicking all the time that, you know, you have taken big projects on your own and you have handled it on your own, be it sales, operations, service, any background. I was heading in that segment in a very commitment level. So ये बहुत clear था 2008 में that, you know, now is the time that I move into entrepreneurship thing. So I've shot down few projects that किस project में I have to start my career. And at that time, you know, it was coming to my mind that, you know, for doing any project, you need a good funds. But that was the biggest challenge I was having. While leaving the job, you know, you were having a flat on your own name, you're having a car on your own, but the balance, bank balance, you keep 3, 4, 5 lakhs, not more than that. और कोई भी project को मुझे start करने के लिए I need minimum 50 lakhs or 1 crore to start a project. So getting a equity or funding, that was a very big challenge. और उस time वो clarity नहीं थी कि immediately कहाँ से fund support मिलेगा. So with the help of my dad again, you know, he was into a packaging line, and he told me to get into this bottling business. It's a very good business and he will support me on that. So as with the help of him in 2008, and, you know, I gone back to my hometown that was in Bareilly, and we started a bottle business there and took some bank loans, and I started that thing. And first 1 year, not even first 1 year, even the first machine, I took it from the market, the bottle making machine, I took it from the market. It was very, you know, very unorganized sector I've seen there, because I came from a corporate background. और यहाँ पर मुझे यहाँ पे बहुत ही local type के लोग, और उनका जो way of handling है, that was in a very shabby manner. Like we in corporate companies, we deal in a certain manner, and here people deal in a certain different manner. और वो एक मुझे बहुत different segment दिखा to work with them. Then when we started the bottling business, although it was going little good, but down the line 1 year, I was not enjoying that thing. You know, जिससे machine लिया था, उसका machine अच्छे से support नहीं कर रहा था. First machine जो I've taken, you know, Delhi guy, he was having a lot of technical problems. They were not supporting me. So machine has a lot of issues. Then I thought that, you know, हो सकता है मैंने first machine गलत जगह से ले लिया. Then I made a list of all India machine manufacturers. Then I took a second machine from the Bombay, which I found, which is one of the very fine machines manufacturer. Although it was little costly, but I took it from there. पर उसमें भी मुझे उतना commitment level नहीं दिखा जो हमारा commitment level corporate level पे होता था. But somehow I was not enjoying that thing. And I, being a technical background, I thought that I can make a better machine and I can do something in this market. Then I told my dad कि मुझे machine बनाना है. You know, he was very surprised that कैसे machine बनेगा ये. मतलब he was IT line guy, electronics guy. He never into mechanical things. So he asked me to think it over. But I took a decision that yes, I will make machine on my own in a better way. The people are doing this market. So I come back from my hometown to Delhi, and with the help of some industry people in Faridabad, it's a major machinery hubs. I had some good circle there. So unko मैंने अपना presentation दिया कि this machine I will make, and we were 4 partners and we started to make machines there in Faridabad with my presentation and my commitment. Although it sounds very good, उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं machine बनाऊंगा, और जो मैंने presentation दिया था, तो they somehow they supported me. So in 2009 mid somewhere, we started this venture of machine manufacturing. I was not having any single penny in my hand. I was just having support of those industry people, and we were 4 partners and we started up making machines. Within 3 months,
within 3 months of while making our first machine, मेरे पार्टनर्स को लगा ये मशीन बनेगी नहीं और ये नहीं होगा और ये he is keep asking money from us. Or one sudden day they just refuse to being a partner to this and they keep asking money back from me. I borrowed some few lakhs rupees from them. I had to return them, but उस वक्त मेरे पास हमेशा choices होती थी कि whether to come back to job or to continue this journey. But I decided to continue the journey till the time I prove myself that, you know, I will do something on this. और हम जब operations projects में होते थे तो बहुत challenges projects हम लेते थे और उसको we make sure I have that thing कि मुझे solutions में जाना है, not to think of the problems, and I keep solving the things. So I have a very clear vision on that time कि मेरी ये मशीन बनेगी और impact करेगी और definitely हम एक दिन कुछ ना कुछ इसमें करेंगे. तो वहां से मेरा बहुत tough journey start हुआ and because when I gone to bank has clearly said that you bring your 3 years balance sheet, then only we'll support you. So the startups bank doesn't support at that time unless until आप कुछ collateral नहीं करते हैं और उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं था उनको देने के लिए. But that commitment was there कि ये machine बनेगी. So I was having 3-4 people with my staff. Mostly काम मैं खुद करता था, being making or borrowing or technical or anything. So it took me almost 6 months more to build up my first machine. And that was a very challenging time. By the time ये machine बनी, इसकी quality segments मैंने बहुत research करके किया था. Worldwide machines कैसी हैं, बाहर countries में machine कैसी हैं, हमारी कैसी हैं, हमारे Indian environment कैसा है. So I keep working hard on that. So by the time my first machine came out, now is the time to sell the machine. Some people has committed me कि आप जब first machine बनाओगे हम लेंगे. But everyone has refused at the time of selling to them. Or then again, you know, my struggle has become more bigger. And I was not from the same industry, तो उससे भी मुझे challenges हो गए थे because I came from a very different industry. मेरे लिए industry different थी, मेरे लिए technology different थी, सब कुछ different था. बस एक चीज थी कि you know, I have a junoon to make it bigger in this. और उसके बाद फिर मेरा challenge और ज़्यादा tough हो गया because I have to sell this machine so that I make money out of it and then I start my journey more bigger way in this. अब उसको sale कैसे करें? तो उसके लिए I don't have a money support, funding support because everybody is keep laughing on me कि ये कर क्या रहा है white collar job, क्यों ये सब छोड़ के एक छोटी सी workshop में बैठा हुआ है and he's doing something like this. But you know, whole night I keep thinking on it कि मुझे कैसे करना है. So only thing in my mind always is कि मुझे solution पे आना है, not कि problem पे सोचना है. So every time solution पे I keep my mind very much on. And then I thought कि इसको किसी तरीके से कुछ database लाया जाए और उनको connect किया जाए. So I went to Nehru Place. I bought some industrial directory at the rate of कोई पुरानी मैंने industrial directory खरीदी उनसे 1000 रुपए में 2000 रुपए में directories खरीदी हैं और उस directories को मैं लेकर आया अपने workshop में और उस वक्त Reliance का एक scheme आया हुआ था 1 पैसा per SMS. तो वो scheme ने मुझे बहुत help किया. So every day I make sure that I send a very nice SMS to at least 200 to 300 people every day, that this is India's very advanced machine and this is this technology and all those things. Out of those 300 people, 2-3 लोग तो मुझे call back कर ही लेते थे. So इस तरह से मेरा जो journey है कहीं ना कहीं मुझे help करने लग गया और मुझे लोगों के call back आने लग गए. And you know, I keep telling people in a very nice way, I give a full commitment to them. Then you know, people keep asking आपकी machine कहाँ है, हमने देखी नहीं है, आप बहुत costly बता रहे हैं, आप महंगी बता रहे हैं. So those kind of challenges were there. But somehow my commitment was there और मेरे mind में हमेशा ये रहता था कि मुझे ये करना है, पीछे नहीं जाना है. Although for my
daily earnings, my wife supported me a lot. And Kapila told me that, you just think of this work and I'll take care of the home. So she was working in a school at that time and taking care of my son education and uh, home expenses. थोड़ा बहुत मैं कुछ पार्ट टाइम काम भी कर रहा था so that कुछ earning to maintain रहे. But meanwhile, my commitment was very much there on to making this machine and make a big impact on the industry. और माइंड में बहुत क्लियर था कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना है, नेक्स्ट कहाँ जाना है, नेक्स्ट कहाँ जाना है. सो ऐसे करके एक एक करके होता चला गया. और इन ईयर 2014 I got a big you can see a game changer in my thing when I came to know that liquor industry में बहुत बड़ी एक डिमांड निकली है, especially in Bihar state. और वहां पर उनको सडनली पेट में वो लोग कन्वर्ट हुए हैं पाउचेस से. और इमीडिएटली वहां पे मोर देन 100 मशीन्स के ऑर्डर्स निकलने वाले और रिक्वायरमेंट होने वाली है. और उनके लिए मैंने एक स्पेशल मशीन लिकर के लिए बनाई और वो मशीन मेरी सक्सेस हो गई. और उसका डेमो मेरे को बहुत सक्सेसफुली वो ऐसा हो गया कि वो उनके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए वो था. एंड सडनली my manufacturing capacity was not to make more than 3 to 4 machines. 4 मशीन से ज्यादा हम नहीं बना सकते थे. और उस पीरियड में 2015 on single night I got an order of 18 machines. Within a week I got an order of 36 machine. Then within 15 days I got an order of more than 80 machines. और मैंने इतने ऑर्डर उठा लिए थे कि मुझे खुद नहीं पता था मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा. और वो 80 मशीन्स के ऑर्डर लेने के बाद इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका हो गया कि हाउ कुड पेट प्लस इंडिया ओवरनाइट इतने ऑर्डर लेके बैठ गया है. एवरीबॉडी इज सरप्राइजिंग एंड देयर व्हाट माय एक्सपीरियंस काउंट्स बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ माय जॉब कैरियर दैट हेल्प मी अ लॉट. 60 डेज में मुझे वो मोर देन 80 मशीन्स डिलीवर करनी थी और मेरी कैपेसिटी 3 to 4 मशीन से ज्यादा पर मंथ की नहीं थी. I did nothing but just a planning. 7 to 10 days, I did a big planning. So what was the cost of each machine, Dheeraj ji? So that machine was cost somewhere around 7 to 8 lakh rupees. Each machine? Yes. Oh, that's a huge order then. Yes. More than 15 crore rupee order came out over a night at that time. Wow. I think recently you went to Germany also and a couple of places in Europe. That Yes. time also for the sales. Did you get those type of orders again? So ये चीजें हमेशा अपनी तरफ से you have to keep doing thing. और exhibitions में participate करने से immediately तो नहीं आता है, but आपके लिए मेरे को फर्स्ट यूरोप का एक ऑर्डर तो जरूर आ गया वहां पे. और आगे के बाद काफी पाइपलाइन हमारी रेडी हो गई है उसके लिए. Wow. Yes. And that was always my dream कि one day I will showcase myself in Germany. That was also one of my Beautiful. So can you just show some what machines you make just for a visual impact that we know what you are doing, what work? I just seen for me machine is very different in my mind, so I can see what it is. Yeah, Kapila will share you just a 4 minutes video, and that will give you what we are today. That will show you how we are doing it today. So let's see that video, then you continue also. Yes. So people can relate with what you are saying. The advent of PET bottles has revolutionized the bottling industry in current times. And one name that has become synonymous with PET and plastic industry is PET Plast India. The PET blowing molding machines manufactured by PET Plast India are installed in various liquid packaging industries like fruit juice plant, cold drink plants, mineral water plants, liquor industry, edible oil,
home care industry, and various other packaging industries. And above all, PetPlast works not only as a mechanical company, but as a research-driven organization backed and supported by its visionary director and efficient management. Located at Faridabad, the plant is spread over a sprawling area and is having a plan to expand it further. The high quality and supremely efficient machines that PetPlast manufactures are the best in business. These fully and semi-automatic machines satisfy all national and international accreditation and benchmark. PetPlast's dedicated R&D department ensures to bring the most innovative and energy-efficient products in the market. The excellent work carried out by the design team is executed completely at PetPlast's state-of-the-art manufacturing unit. The plant is endowed with a separate tool room area having automatic CNC machines and semi-automatic machines. The most important area in the premises of plant is shop floor. It's here the assembly and installation of machines are done. All the steps of assembling take place with utmost precision and dexterity. Company's stringent quality measures ensure every part is tested and checked before assembling. To ensure trouble-free operation and to maintain optimum quality of machines, the company also does a lot of testing and trial run before the delivery to client. PetPlast also has a dedicated customer care department to understand and solve the queries of its customers. This client-centric approach has led PetPlast to become a favorite of its clients all across the globe. In India too, the company has got esteemed clients from different industries. PetPlast regularly participates in all major national and international packaging exhibitions to expand its base further. At PetPlus India, we believe in we grow as our customer grow. Yeah, wonderful video, Dheeraj ji. At the end, you have to give a little smile, that's all. Very seriously, you say, PetPlast is like, So next time you take a video, give the smile and gives a lot of energy, how you are doing right now. So I just want to ask you, you make these machines, right? Yes. Not the bottles and all. That's No. You just sell the machine and people buy these machines and then they start their business of packaging. Am I right? Yes.
Okay, so now we get the get the feel that way. So I wanted to, I mean, you want to share and finish the story? You can finish the story now. We can relate. Yeah. Yeah. So like my journeys are fabulous, and I really enjoyed the whole journey of. मुझे अब ठीक से याद भी नहीं आता है कि पीछे की हमने क्या क्या स्ट्रगल की है. एवरी ईयर, एवरी मंथ, वी आर ग्रोइंग. एंड बस एक ही मोटो मैंने डे वन से रखा हुआ था कि जो भी मेरा प्रोडक्ट लेगा, हमारा प्रोडक्ट जो भी हमारा कस्टमर लेगा, the whole company, myself, everybody will ensure that that customer should grow with us. और हमारे प्रोडक्ट से उसको ग्रो करना है, और उसके लिए हम अपना बेस्ट करेंगे. और बस इसी मोटो के साथ आज भी हम चल रहे हैं, और ये कैसे हमें ग्रो कराता चला गया, वी डोंट नो. सो दैट वाज. if you would like to share कि आपके पास 3 बिजनेस एथिक्स मेरे से आपने शेयर किया था, लेकिन उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो 3 बिजनेस एथिक्स क्या है आपके लिए? धीरज जी जब मेरे से आपसे शेयर कर रहे थे तो मुझे बोला था कि आई फॉलो वेरी 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 प्रिंसिपल्ड या स्ट्रिक्ट बिजनेस एथिक्स आई हैव. तो मैंने उनको पूछा था क्या है, तो वो तो बताने वाले ही है. लेकिन आपको क्या लगता है? लेट्स सी इफ यू कैन गेस. तो आप लोग को भी ये प्रेरणा मिलेगा. आई मीन बिजनेस, जिसका भी बिजनेस बढ़ता है, ऐसा ही नहीं बढ़ता है. देयर इज सम प्रिंसिपल्स बिहाइंड दैट, वेदर इट इज हूसोएवर, कोई भी नाम ले लो, लेकिन कोई प्रिंसिपल्स होता है. तो वो प्रिंसिपल्स क्या है, आपको क्या लगता है? लेट्स सी. टीएससी हमने कोविड टाइम में डेफिनेटली किया था. नरेंद्र राणे जी ने हमारी पूरी कंपनी को किया था, और एक बार मैंने डेडिकेटली मनोज जी का भी अनम्यूट करिए. वो बाद में पूछेंगे. सो विल जस्ट So the three ethics, जब मैंने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत लोगों से ये सुनने में आता था कि आपको बिजनेस करना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, झूठ बोले बिना नहीं काम होगा. और मैं सुबह शाम इसी बात से परेशान रहता था कि जिससे भी बात करो, हाँ ये गाड़ी निकल गया है, हाँ ये हो गया है, अरे सर आपने तो बोला था, अरे सर नहीं बोला था, कैटलॉग में भी कुछ लिखा होता है, देते कुछ है. तो मुझे बहुत ये सुनने में आता था कि आपको सुबह शाम झूठ बोलना होगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. सो वन एथिक्स, मैंने बोला कितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपन झूठ नहीं बोलेंगे हम. ब्यूटीफुल. Yes, and the second thing which I told you just now कि हम अपने कस्टमर के लिए पूरे कमिटेड रहेंगे, और उसको ग्रो कराने के लिए हमसे जो बेस्ट होगा हम करेंगे. So I keep making sure that I keep giving some tips, some knowledge, कैसे भी करके कोई नॉलेज पास करके, या इंडस्ट्री की कोई न्यूज देके, या कोई टेक्नोलॉजी में उनको गाइड करके कस्टमर को ग्रो करने के लिए हमसे क्या बेस्ट होगा हम करेंगे. और उससे भी हमें बहुत अच्छा एक रेफरल मार्केट अपना मिला, और हमारे कस्टमर जो डे वन से थे वो आज हमारे मेंटेन चल रहे हैं. तो ये भी एक हमने एथिक्स को फॉलो किया, और ये मैंने इंश्योर किया है कि माय होल कंपनी, एवरीबॉडी शुड हैव दिस थिंग्स. कौन सा? पहला ट्रूथफुलनेस है. पहला ट्रूथफुलनेस. सेकंड, वी ग्रो एज आवर कस्टमर ग्रो. ओके, कस्टमर्स ग्रोथ. ओके, यस. एंड थर्ड? थर्ड इज मेरे को नॉलेज शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं अपनी कंपनी में सबको यही करता रहता हूँ कि अपनी नॉलेज शेयर किया करो. विदाउट शेयरिंग योर नॉलेज कभी नहीं चलेगा. तो unbiased, okay, I keep sharing knowledge, whatever I am having knowledge, I keep passing everything to my team. तो इस तरह से मैंने अपनी टीम को बहुत सपोर्ट किया, और उनके साथ जितना नॉलेज हो सकता था I passed on to them. When you say knowledge, what do you mean by knowledge? Outer knowledge, skill knowledge, inner knowledge, or what is it? Majorly skill knowledge. Skill knowledge. Okay. Yes. So I'm just, I mean, after hearing your this thing कि आपने 5,000 रुपया से शुरू किया, तो मुझे अपना बिजनेस याद है कि हमने भी, my brother and me, we started. तो उनका 4,000 रुपया था, आपका 1,000 ज्यादा था. तो हमारा मल्टी करोड़ भी गया था, एंड इट वाज गोइंग मल्टी करोड़. ऑफ कोर्स मैंने 97 में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे और कुछ, आई वांटेड टू, आई वाज मोर कीन इन बीइंग विद गुरुजी एंड द नॉलेज इनवर्ड. तो दिस इवन मेरा भी एक ये उसूल था एट दैट टाइम, दैट बी वेरी ट्रूथफुल. सो ये मेरा संस्कार था मम्मी से ही, मम्मीज गिफ्ट टू मी.
and we were always very truthful in our this thing. So when I was selling to a customer, हम लोग ladies garments बेचते थे. So if a lady was not looking good, okay, or dress when they are not looking good in my eyes, of course, ये हमारा perception है. But if it's not looking nice, so how can I tell that like, you're not looking good? Is it looking nice? No, it's not looking. I could not tell, but I'll say, why don't you try this? This is looking better. This will look better like that. So how to tell a lady not looking good? So we other way. No, this is better than that one. So मेरे truthfulness. साथ भी बहुत बार हुआ है कि कई बार पेरेंट्स लोग आए कि मेरे को अपने बेटे को सेटल करना है और मैं अपना रिटायरमेंट का फंड इसमें लगाना चाहता हूँ, मैं अपना पीएफ का सारा पैसा लगाना चाहता हूँ. कई मेरे पास आए जो बहुत ही छोटा सा उनका कोई काम है और पूरी अपनी जमा पूंजी लेकर आए और मुझे लग गया कि ये काम करके ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसको करके ये लॉस पे ही जाएंगे और इनका कोई बिजनेस आइडिया क्लियर नहीं है इनके माइंड में, मार्केटिंग का इनको क्लैरिटी नहीं है. तो मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको डिस्करेज किया कि आप मत घुसो इसमें. और माय सेल्स टीम ऑलवेज कीप आस्किंग मी, सर आपने ऐसा क्यों किया, ये तो पैसे लेके आए थे आपके पास. सो Beautiful. I did this thing. नहीं, so you are really caring for the customer कि उसका अगर पूरा लाइफ सेविंग डाला और कल को कुछ ऐसा मार्केट उनको सपोर्ट नहीं किया, then why? It's not the machine's fault, but it's the market. They are not able to do the business as others can do. So wonderful. Yes. And customers growth, and then like you said, sharing the knowledge. I know you are very much keen in sharing knowledge, but you also shared the inward knowledge. जब मैं तो मिला था in COVID time, उससे पहले भी I remember you did one program where all your people came in Delhi. I had come there few years back, Yes. right? So you are very much keen in sharing the inward knowledge also with your team. Yes. And Yes. many of them are here also. शायद काफी लोग इधर है भी, right? मुझे कुछ नाम तो familiar दिख रहे थे, Gurfan or something like that, right? Yes. So what do you have to say about your application of, since you have come through in touch with Rishi Samskriti Vidya Kendra, काफी उनका programs आपने किया है, so you just share something about that. आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया था जब आप गुड़गांव में आए थे और जैसा सोचोगे वैसा होगा, थॉट प्रोसेस को अपना क्लीन रखोगे तो अपने आप आपके एक्शंस में वो अपने आप दिखने लग जाएगा. वो चीज मुझे बहुत हेल्प करी होल माय जर्नी टिल डेट. एंड योर फ्रेम का कि आप अपना पैटर्न चेक करो और उसको Reframe. एंटीडोट बना के उसको अपने थॉट प्रोसेस में लेकर आओ तो हर चीज मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस आपके सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बी इट योर फिजिकल और रिलेशनशिप और फाइनेंशियल और एनीथिंग. सो आई कीप इन माय माइंड दैट थिंग वेरी मच और तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि कुछ भी कोई आता है तो मैं उस मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो इमीडिएटली मैं उसका एंटीडोट तैयार कर देता हूँ और अपने माइंड में क्लियर कर देता हूँ यू हैव टू चेंज इट. सो ऐसे कर करके बहुत टिप्स मुझे आपसे मिलती चली गई और आई रियली एंजॉय योर कंपनी व्हेनेवर आई वॉच यू, नो डाउट अबाउट इट. और जितने लोगों को मैं बता सका उन सबको बताता भी जाता हूँ. How has gratitude taken? How have you taken gratitude in your life? आप मानते हैं gratitude का तत्व, तो आप के बारे में gratitude का मेरे को बहुत क्लैरिटी नहीं था, बट एक बार कपिना ने लखनऊ में gratitude पे सेशन लिया था और वो उसकी वो सेशन वाज सो आई ओपनिंग फॉर मी और उसके बाद से मुझे वो कुछ चीजें इतनी क्लियर हो गई कि कैसे आपको यूनिवर्स से तथास्तु मिलता है और कैसे आपको जस्ट थैंक्स बोल जाने से आपकी कितनी मुश्किलें आसान हो जाती हैं. तो वो चीजें डेफिनेटली वो भी बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है आपका और वो बहुत हेल्प करता है. In fact, I remember you went through, both of you rather, went through a very, very tough personal challenge also, in your own families and all that. We don't have to go into details, but I remember that that was a very tough time, and I'm just wanted to share with everyone कि personally भी जो challenge,
if any father or any mother would have gone through that particular challenge, they would have been, really, really devastated if they had gone through that. But I remember both of them, both of you took it up so beautifully, and gratitude played a lot of part in that. Am I right? Yes. Yes. Kapila keep telling me that, when we have not done anything wrong to anybody, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कुछ परेशानी आए. At the end of the day, हमारा हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा. राइट. सो कितने भी तकलीफ आने दो, ऐसा लगता है कि इट वाज लिटरली कि किसी ने पत्थर लेकर उनके ऊपर मारा. मुझे वो इंसिडेंट याद है. तो पत्थर मतलब एक छोटा पत्थर नहीं, बड़ा पत्थर लेके मारा है. लेकिन आप वो पत्थर किस तरह से लेते हैं, उसी में आपका सक्सेस है या फेलियर है. अगर आपको पत्थर किसी ने फेंका है और आपने उससे भी बड़ा पत्थर उसको फेंकना चाहते भी है, तो हम गए काम से. हमने फेंका नहीं, लेकिन चाहते कि he did like this, I will do also to him like this. तो ये जो है ना, ये जो एटीट्यूड है, ये हमको बहुत मतलब it will take you down a lot. So that I remember both of them, and that journey continues. ऐसा नहीं कि नहीं है, but फिर भी to come out of that type of situation is wonderful. Hats off actually. Yes, no doubt. मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, कभी मेरे सेल्स टीम वाले 2-2 महीने ब्लैंक बैठ जाते हैं कि कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा सर, ऑर्डर नहीं आ रहा. आई कीप टेलिंग दैट कि ऑर्डर आने का केवल एक सबसे सिंपल रूल है कि अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ा दो, अपने हिट्स बढ़ा दो. मोर द हिट्स, अपने तरफ से अपने बेस्ट दो, अपने हिट्स बढ़ा दो, अपने आप सक्सेस अपने आप डाउनफॉल करेगी. और वही हो गया कि अपने कर्मा में आपके ऊपर आपका जो कंट्रोल है, दैट इज योर एक्शन. और अपने एक्शन में जितने आप अच्छे कर्मा जोड़ते चले जाओगे, आपकी जितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी. बस यू कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर एक्शंस. या इनफैक्ट इन बिजनेस दे से कि कोई भी बिजनेस चाहते हैं शुरू करने के लिए, एनीवन वांट्स टू स्टार्ट द बिजनेस. अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि बहुत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन 80% of the people who start businesses, they close it down. So there's a golden rule in entrepreneurship. Of course, it's just a rule, thumb rule रहेगा कि you have the first 1000 days सबसे चैलेंजिंग होता है कि 1000 दिन यानी कि 3 साल आपको गुजारना है विदाउट लेटिंग योर इमोशंस डाउन कि ओ मैं फेलियर हो गया. क्योंकि जो पहला 3 साल है सेटिंग में जाता है कोई भी एंटरप्राइज. This is a golden rule in business. So I am whoever wants to start business, अगर करना ही है तो 1000 days पे आप कुछ भी डाउन, जितना भी डाउन हो, वो कंटिन्यू रखो. So what you have to say on that? आपका तो जर्नी वैसा ही है, more than 1000 days था, लेकिन फिर भी आप बताओ. मुझे आपने बताया था कि 5 साल में more than 1800 days आपके लिए बहुत मुश्किल था, and break even भी नहीं हो रहा था. Am I right, or you can correct? Yes. Even I have seen a time, मेरे पास Hyundai Accent कार थी, और every day I have to travel 60 to 70 kilometers, और मेरे पास पेट्रोल के पैसे अरेंज होना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो इमीडिएटली मैंने उसको CNG में कन्वर्ट कराया था. और एक 100 रुपए के लिए भी I have to keep thinking twice कि ये कैसे खर्च करने हैं. So that period I have gone through. Yes. So it took you. When did you start breaking even? How many years it took for breaking even? Almost like 2.5 years. इतना हो गया था कि सर्वाइवल होना इजीली हो गया था. बट एट दैट टाइम आई पास थ्रू अ वेरी बैड फेज अगेन. माय डैड, ही वाज सफरिंग विद अ कैंसर, और उनके ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लग रहा था. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था. बट लकीली कहीं ना कहीं कोई अच्छे कर्म थे जो अपने आप बड़ा इजीली सॉल्व होता चला गया. Beautiful. We always tell all entrepreneurs, मैं प्रोफेशनल इनसाइट्स जब प्रोग्राम शुरू किया था 2007, और मैं खुद पर्सनली इसको इस्तेमाल करता था. आई वुड ऑलवेज, जब से मैंने सिद्ध समाधि योगा किया, दैट इज इन 89, तो उस दिन से मैंने संस्था को डोनेशन शुरू किया था. सो आई रिमेंबर, आई टेल यू एग्जैक्टली द स्टोरी, a very funny story, that
मैं बिजनेस वाला प्रॉफिट, so everything I am calculating in my mind, you know, कि प्रॉफिट हर चीज में बनिया जैसा सोचता। तो एक टाइम किसी ने बोला कि डोनेशन दो, यू नो, वन ऑफ द टीचर, दे शुड नॉट आस्क सो मच बट दे आस्क। तो मैंने बोला, एज सून एज आई डिड द एसएसआई प्रोग्राम, मैंने बोला चलो हर महीना मैं 600 रुपए दूंगा पर मंथ। क्यों? वो इंटरेस्टिंग स्टोरी क्यों? क्योंकि वैसा भी मैं उतना उतना पैसा खर्च करता था मम्मी का मेडिसिन के लिए। ओके, तो मैं बोला मेडिसिन तो बंद हो गया अभी उनका, तो 600 रुपया का ये वसूली हो जाएगा उसका। नेक्स्ट फर्स्ट एएमसी आई डिड, ये फर्स्ट क्लास। सेकेंड एएमसी प्रोग्राम में गया था रिट्रीट, तो मैंने 600 का 1200 किया, फिर 1200 का किया, फिर मैंने 2000 किया, फिर 5000 किया। देन आई टॉट टू माई सेल्फ कि देखो आई एम गिविंग गवर्नमेंट, एट दैट टाइम इट वाज 40% आई थिंक टैक्स, 35-40% टैक्स, मैं इतना उधर दे रहा हूँ, मैं क्यों नहीं संस्था को दूं? और संस्था, so then we started giving 25,000 rupees per month. At that time means 25,000 means this is 30 years back, 30 years back. So you can say it is more than a few lakhs today, you know, that way. Yes. So, so that was the thing that I always had this, और जब of course फिर मैंने वो business छोड़ दिया, and उसके बाद में this we started this professional insight. So that since that time I have been telling everyone, give 10% of your income, वो 10% back to society, back to society। 10% क्यों? 5% to जहां से आप सीखते, यानी कि आरएसवी के, या 5% to जो भी आपके दिल में causes है, old age homes, maybe animals, maybe greenery, maybe education, maybe whatever। तो यू ऑलवेज, गुरु जी का एक तत्व है, लिव लाइक अ किंग। किंग क्या है? हाथ हमेशा देता है। तो ये जो 5+5 मैंने सिस्टम बना के रखा था, मैं हमेशा वो चालू करता था। आई वॉज ऑलवेज फॉलोइंग दैट। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट, यू शेयर। आप भी देते हैं, लेकिन आप उसके बारे में बताइए। Yes, by blessing of you and ये हमेशा हमारे मन में तो रहता है कि हमें सोसाइटी को देना है किसी न किसी तरीके से, बट एक कमिटमेंट के साथ वो नहीं हो पा रहा था। देन लास्ट टाइम व्हेन आई अटेंडेड द स्कोप कैंप, और मुझे बहुत क्लैरिटी हुई कि इसके लिए कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। देन आई कमिटेड टू माई सेल्फ एंड माई ऑन माई बिहाफ ऑफ माई टीम कि हम अपना प्रॉफिट का 5% इस चीज में हम करेंगे। और उस दिन से लेकर अब तक हम पूरी तरीके से कैलकुलेट तो नहीं कर पाते हैं, बट ऑलमोस्ट हम उतना 5% जरूर हम सोसाइटी को दे रहे हैं। एंड आवर प्रॉफिट 5% इज गोइंग टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज मेजरली टू। ब्यूटीफुल। यस गुरुकुल। मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि 5% में जो आप बाकी का दे रहे हैं, यू इंक्लूड योर टीम ऑल्सो, यू नो। तो आपको, ये मैं सबको बोल रहा हूँ, इफ यू आर इन द बिजनेस, आई वुड सजेस्ट, मेरा सजेशन है, और जो हमेशा हम बैगेट में भी किया है, करते हैं, और जेड्स में भी किया, कि हर एक व्यक्ति को सिद्ध समाधि योग हमने दिया है। मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हमने दिया है लाइव प्रोग्राम्स। मुझे याद है जब मैंने एसएसवाई किया था, तुरंत वेरी नेक्स्ट मंथ हमारे पास 90 लोग काम करते थे उस टाइम। सो 90 ऑफ देम स्ट्रेट अवे वी हैड अ क्लास ऑफ सिद्ध समाधि योग। Lakshmi Ma and Mohanji were the teachers. We called them and we had a program for all the 90 people. So how many, give back this knowledge of success program, bolo, VBOTM, visions, beliefs, Siddha Samadhi Yoga, converting industry to universities. And then of course we can ask the next question, but let's give you a 10-minute pause. If you are in business or if you are in working for some company, ये देना हमारा एक्चुअली कर्तव्य होता है, क्योंकि ये आत्मज्ञान है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, माय परसेप्शन। यस, और इसमें मनोज जी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। जब मैंने बिजनेस इनिशियली स्टार्ट किया था, तो बहुत लोगों ने मेरे पैसे कहीं ना कहीं से रिटर्न नहीं करे किसी उस तरीके से, और मैं बहुत पेन में आया था उस टाइम पे। और उस टाइम वैसे ही मैं बहुत ज्यादा टफ टाइम में चल रहा था, बट मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ था कि हमें किसी को 5,000 रुपए भी देने हैं तो वो हम देंगे।
और शायद मुझे धीरे धीरे वो चीज अपने आप लगने लग गई कि अपने आप मुझे जब भी मेरे को बहुत जरूरत होती है पैसों की, अपने आप वो किसी न किसी डायरेक्शन से वो अपने आप आता चला जाता है। और धीरे धीरे मेरे माइंड में ये क्लैरिटी हो गई कि अगर हम अपनी इंटेंशन क्लीन रखेंगे तो अपने आप आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते निकल आएंगे। और जब से ये 5% का भी मैंने मनोज जी का प्रोग्राम सुन के और अपने आप को कमिटमेंट किया, पता नहीं उसके बाद और ज्यादा मुझे फील हो रहा है कि और ज्यादा एबंडेंस में आ रहा है, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ और वो मल्टीप्लाई होके मुझे रिटर्न हो रहा है। और इसको करके आई एम एंजॉयिंग डूइंग इट। या एंड इनफैक्ट मुझे वो आपके साथ पहला जो बात करने का, आप सबको बताओ, आपका बहुत सबसे इम्पोर्टेंट डेट ऑफ द मंथ इज 10th ऑफ एवरी मंथ, उसका आप सीक्रेट बताओ। सो लाइक 10th इज अ डेट जो हमारा सैलरी डे होता है। और ये भी मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट रखा हुआ था कि किसी भी हालत में कितना भी टफ टाइम हो, सैलरी इज अ थिंग जो हम एक दिन भी डिले नहीं होने देंगे। और हमारा प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है, तो कभी किसी प्रोजेक्ट में पैसे आ जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में डिले हो जाते हैं, तो वो बहुत प्लस माइनस होता रहता है। बट टिल डेट, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, चाहे कितना भी टफ टाइम आया, हमने अपने सैलरी डे को एक दिन भी डिले नहीं होने दिया। एंड दैट इज वन थिंग माय होल टीम आल्सो अप्रिशिएट अ लॉट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।